Assalamu alaikum. If you are watching ELT streaming, and this is Fawzia Said. Um, our today's under discussion topic is effective communication skills. Um, First of all, have a glance on the outline of today's session. What is communication? We will um, talk about effective communication skills, the ways of communication, why effective communication is important, significance of effective communication, tips to improve communication skills. How can you improve your communication skills in your daily life? ये हम आज डिस्कस करेंगे. First of all, many of us communicate with people every day, whether in person or on the countless digital platforms. Um, so the question is, how much of our communication actually reaches the intended audience or the person that the way we hope to communicate. तो communication basically है क्या? What is communication? Communication is the art of transmitting information, ideas and attitudes from one person to another. जो आपके दिमाग में होता है, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी आइडियाज हैं, वो आप दूसरे को जब बताते हैं, शेयर करते हैं उसके साथ, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. So communication is the process of meaningful interaction among human beings. When you communicate your ideas, your thoughts, so the interaction process starts. और ये एक मीनिंगफुल होता है. आप किसी को कुछ शेयर करते हैं, अगला आप उसमें ऐड करते हैं और फिर आपकी एक कम्युनिकेशन डेवलप होती है. उसके आइडियाज आपको मिलते हैं, आपके आइडियाज उसको मिलते हैं. सो अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स through a common system of symbols, signs और behaviors. ठीक है, ये है communication की definition. So now comes to effective communication. In our professional and personal lives, the skills to exchange information with clarity, empathy and understanding is very necessary. So effective communication means the person is able to both actively listen and clearly express himself to those around you, either at the workplace or in any other environment. So there is no single skill or technique that will make you better at communication. Effective communication requires a diverse skill set that covers both verbal and non-verbal communication cues as well as close listening. तो कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप इम्प्रूव कर लेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी. देयर आर मल्टीपल स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस. Effective communication requires us to be clear and complete in what we say or what we are trying to express. ठीक है, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब होती है जब आप अपने मैसेज को क्लियरली अगले तक पहुंचा दें और कंप्लीट मैसेज दें, अधूरी बात ना करें, और जो आप कहना चाह रहे हैं वो अगले को समझ आ जाए. सो देर आर सम कॉमन वेज ऑफ कम्युनिकेशन. दीज आर स्पोकन वर्ड्स, written words, active listening, body language and visuals. So effective communication is the process of ideas. It's process of exchanging ideas, thoughts, opinions, knowledge, and data so that the message is received and understood with clarity and purpose. And the ways we use here are discussed, that they may be spoken words, written words, एक्टिव लिसनिंग भी उसमें शामिल होती है, बॉडी लैंग्वेज और विजुअल्स. कम्युनिकेशन occurs in many forms including verbal and non-verbal, written, visual, listening. It can occur in person on the internet, different forums on the internet, that is social media, websites, telephonic talk over the telephone, or
बाय मेल। तो कम्युनिकेशन आपकी जो है वो वर्बल भी होती है और नॉन वर्बल भी होती है। आप अपना मैसेज बोल के भी बता सकते हैं और रिटर्न में या विजुअल्स के थ्रू या डिफरेंट मैसेजेस के थ्रू लिखकर या डिफरेंट जैसे इमोजीज हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, आप उनके थ्रू आप अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। So there are, what are the goals of communication? That is to inform, or you can share your knowledge or inform your message to the other person, persuade and build relationship. For communication to be effective, it must be clear, and you are going to inform something or you are going to convey something that must be clear, correct, complete, concise and compassionate. ठीक है, ये 7 C's हैं जो हम आगे जाके अभी डिस्कस करते हैं। और with the effectiveness of communication, surely your relationships will be improved or you build न्यू रिलेशनशिप। जितने आप अच्छी तरीके से बात करेंगे या आप इस तरीके से अपना मैसेज कन्वे करेंगे तो वो उतने ही आपके अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, ईदर पर्सनल और सोशल, आपके घर में भी और आपके फैमिली में और वर्क प्लेस पे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में और किसी जगह पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, सो द प्रिंसिपल्स or the basics essences of the communication this is the personal process, but it is a two-way process. It occurs between people. It involves change in behavior. It is a mean to influence others. When you are correct, you are concise, you are clear in your thoughts, so people take your impact. ठीक है, expression of thoughts and emotion through words and actions. It is a tool for controlling and motivating people as well. Your communication matters a lot. If you are saying something in more effective way, more people will motivate and you can take control of them. It is a social and emotional process. ठीक है, social process भी है और emotional process भी है, और it improved your social, emotional and mental health as well. ठीक है, you are able to communicate well, you better solve your problems and deal with others. So why effective communication is the key to success? That it is an important tool for professional and personal success. If you are an effective communicator, you can help others and you can convey your message that people take you seriously, and your saying or your message has value and it impact others life. ठीक है, क्या आप जब इस तरीके से बात करते हैं तो लोग आपका असर लेते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे लोगों की वीडियोस देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बार बार देखते हैं, सो दे आर कम्युनिकेटिंग इन अ वे दैट यू एज एन इंटेंडेड लिसनर टेक द मैसेज इन अ क्लियर वे कि आप उसको बार बार सुनते हैं, आपको वो बंदा अच्छा लगता है। ठीक है, it is an indicator of your ability and intelligence to solve problems and uh, conflict resolution skills आपकी इससे बिल्ड होती हैं। ठीक है, so it is the significance of effective communication. If you are a good communicator, if you can communicate your message in a clear, effective way, so you are able to solve problems and the conflicts and avoid the conflicts. ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट से बच भी जाते हैं अगर आप अपना मैसेज क्लियर कर रहे हैं। सो हेयर डॉक्टर एल्बर्ट ही हैज रिसर्च, और उन्होंने ये बताया है कि एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड्स और या यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है। बॉडी लैंग्वेज आपकी 55% होती है, वर्ड्स और वर्बल जो है वो आपकी 7% है, और टोन जो है उन्होंने नोट की है वो 38% है। सो ऑल दिस थिंग्स मैटर व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ सिंगल स्किल जिसको आप इम्प्रूव कर लें, देर आर मल्टीपल स्किल्स इंटर रिलेटेड विथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
Here we are going to discuss the 7 C's of effective communication that is mostly taught in business communication skills. So these are the clarity, conciseness, concreteness, correctness, coherence, completeness, and courteous. So make your objective clear. If you are clear in your thoughts, if you are clear in your in the conveying of your to convey your message, so you avoid complex words and phrases, and the other person can understand you in a better way. ठीक है, आपका मैसेज कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एंड यू हैव टू अवॉइड फिलर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। एक्स्ट्रा चीजें आपका हाँ इस तरह से नहीं, क्लियरली कंसाइज वे में व्हाट यू वांट टू से, टू द पॉइंट बात आपने करनी। Concrete, if we are talking about concreteness, so you should be specific and you use the facts and figures to support your message. Correctness refers to both factual and linguistic accuracy. Coherence होनी चाहिए, does your message make sense, और जो आप जितनी भी आपकी जो बात है वो logical flow में होनी चाहिए, ठीक है, and you have to avoid much details, ठीक है. Your message should be complete, that you convey all the things, all the facts required by the audience. And courteous means that your view from the viewpoint of your audience, ठीक है, कि आप के अंदर courtesy हो, आप इस तरीके से बात करें, आपकी टोन इस तरह की हो कि अगला बंदा आपकी बात को सुने और उसका इम्पैक्ट उस पे हो. So this is the thing that how can we improve our communication, or how can we communicate effectively. So there are some tips that by which you can improve your communication skills. So like any other skill, communication is also a skill that you can improve upon practice. Here are a few ways to start improving your communication. So consider your audience. First of all, you have to take in mind who are you communicating with. किसके साथ आप बात कर रहे हैं? What is the intended audience? आप किससे बात कर रहे हैं? Those you intend to communicate with may differ from those who actually receive your message. ठीक है? Knowing your audience can be key to delivering the right messages effectively. You should consider their age, race, ethnicity, gender, education level, subject knowledge, and professional experience that can allow you to impact how they will receive your message. ठीक है, आप अपने दिमाग में रखें आप बात किससे कर रहे हैं, पेरेंट्स से कर रहे हैं, टीचर से कर रहे हैं. इफ़ यू आर टीचर तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी एज क्या है, वो किस तरीके से आपने उनको ग्रैब करना है. ठीक है, सो यू हैव टू कंसीडर योर ऑडियंस फर्स्ट. If you are, for example, if you are a salesman and you are going to advertise a fast food restaurant, so you might want to deliver your message to an audience that's likely to be hungry. ठीक है, तो उन तक पहुंचे और उसको किस तरीके से आपने विजुअल्स यूज करने हैं, और इफ यू आर मेकिंग रिटर्न एड तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग. So active listening is the practice of giving you full attention in a communication exchange. जब तक आप सुनते नहीं हैं तब तक आप जो है अपने आप को सही तरह से काबिल नहीं बना सकते कि आप कम्युनिकेट कर सके. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस दैट यू शुड बी एन एक्टिव लिसनर. आप एक्टिव लिसनिंग करें, अगले की बात को गौर से सुने. ठीक है, या जहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट पर्सन एंड टेक द इंफॉर्मेशन इन फुल वे. और फिर जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा एंड यू कैन say your message in a more clear way. ठीक है, some techniques include paying attention to body language. अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी आपने नोट करना है और अगले की भी. गिविंग encouraging verbal cues. Then you have to give certain verbal cues. Asking questions and practicing non-judgmental words. ठीक है,
Before executing your communication, be sure to consider your audience and practice active listening to get the heart of their needs and desires. ठीक है, जब तक आप उनकी नीड्स और डिजायर्स तक नहीं पहुंचेंगे, अपने आप को इस काबिल नहीं करेंगे, तब तक बात असर नहीं करेगी. ठीक है. कंसीडर योर बॉडी लैंग्वेज. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग. मेक योर मैसेज एज क्लियर एज पॉसिबल. ठीक है, आप अपने मैसेज को जितना ज़्यादा क्लियर हो सकता है उतना क्लियरली प्रेजेंट करें, चाहे वो लिख के करें, वर्बल और नॉन वर्बल. ठीक है. दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन. इफ़ यू आर अ काउंसलर, यू आर अ सोशल वर्कर, मार्केटर, टीचर, कोलीग और फ्रेंड, यू कैन कम्युनिकेट योर मैसेज इन अ मोर प्रोफाउंड वे. ठीक है. So if you are a teacher, you might take advantage of end of semester feedback forms and act on your students' needs by hosting one meeting during office hours. Likewise, your students might choose to participate in discussions after your lecture, or at least sit attentively and ask questions. So if you are a teacher, you are going to involve your students by giving them feedback, और जो वीक है उनको 1-on-1 मीटिंग दें आफ्टर ऑफिस टाइम, और उसके बाद आप उनसे डिस्कशंस स्टार्ट करवाएं, उसमें उनको पार्टिसिपेशन की जो है मौका दें. तो वो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपकी इम्प्रूव भी करेंगी, और आपकी जो मैसेज है वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब करेंगे. इफ़ यू आर अ टीम लीडर, यू माइट रीड स्लैक मैसेजेस फ्रॉम योर teammates, gauge that they are frustrated with the workload and respond by resetting priorities for the next few weeks. दिस कम्युनिकेट्स टू द टीम दैट देयर वॉइसेस आर हर्ड. ठीक है. अगर आप टीम लीडर हैं तो आप अपने जो मैसेजेस आ रहे हैं अपने कुलीग्स के, उनको कंसीडर करें, उनको इम्पोर्टेंस दें, उनको सुने. ठीक है. इफ़ दे आर कंप्लेनिंग ऑफ ओवर वर्कलोड या जो भी उनका मसला है उसको प्रायोरिटी दें, और उसके बाद उसके साथ जो है आप कम्युनिकेट करेंगे, तो वो आपकी बात को ज़्यादा गौर से और ज़्यादा अहमियत दे के सुनेंगे. ठीक है. If you are parents, so you might have you might have some disagreement with your child about finishing their work, or or anything else. So you probe deeper with open communication. बच्चे को मौका दें बोलने का और उससे पूछें. ठीक है. विदाउट इंडल्जिंग इन डिस्करेजिंग कमेंट्स और अनमोटिवेशनल रिमार्क्स. ठीक है. उसको सुने, उससे पूछें, उसकी प्रॉब्लम को जो है अहमियत दें, और उसके बाद अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप कन्वे करें, तो दैट चाइल्ड विल टेक योर एडवाइस इन मच बेटर वे. ठीक है. और यूज द राइट मीडियम और प्लेटफॉर्म. ठीक है. इफ यू आर यूजिंग द राइट मीडियम और प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट मैटर्स, effective communication requires you to consider whether you need to meet in person, और आप जूम पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप है या सोशल मीडिया की कोई ऐप है, तो उस पर आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है. आपको पता होना चाहिए उसका. सो यू आर गोइंग टू कैच आप द ऑडियंस. ठीक है. और आपको उसको आपको पता होना चाहिए कि अप्रोप्रिएटली आपने उसको किस तरीके से डील करना है. यू माइट असेस द प्रायोरिटी लेवल एंड द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नीडेड. किस टाइप की आप बात करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, you should have knowledge of it. With the platform of Facebook, if you are going to post some products or placement form, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो किसके लिए कर रहे हैं. कैफे है, कोई स्टूडेंट के लिए आप कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हैं, या जो भी हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है कम्युनिकेट करेंगे, विजुअल में भी और रिटर्न में भी. ठीक है. और अगर आप कोई कैफ़े की चीज़ है उसका ऐड उठा के आप एजुकेशन से रिलेट कर देते हैं, तो वो उसकी इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं होगी. लोग उसी को देख के जो है वो उससे आपकी जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट नहीं होगी. ठीक है. प्रोवाइड विजुअल कॉन्टेक्स्ट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट कि आप जो भी बात कर रहे होते हैं, इफ़ यू आर अ टीचर, यू कैन टेक डिफरेंट थिंग्स इनटू योर क्लास. विजुअल्स आप ले जाते हैं तो वो आपका जो लेक्चर है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है. और अगर आप कोई सोशल मीडिया से वीडियो दिखा देते हैं, या कोई आप जो है फ्लैश कार्ड्स या जो भी आप विजुअल दिखाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स पे ज़्यादा अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है, एंड योर कम्युनिकेशन जो है वो बेटर होती है,
your audience take your message in more effective way. ठीक है, check in with your emotions. और आप when you are going to communicate, you have to be very careful about your emotions. Sometimes at workplace or at any other place when you are going to argue in high tone, तो वो जो आपकी असल बात होती है वो भी जो है आप गुस्से में आ जाते हैं, और वो आपकी जो असल बात होती है, जो एक मैसेज आप कन्वे कर रहे होते हैं, दैट बिकम अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वो एक आपकी कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है, और वो आप जो सही बात कहना चाह रहे होते हैं वो भी अगले को कन्वे नहीं होती, और वो मामला ख़राब हो जाता है। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट योर इमोशंस एज वेल। ठीक है, अपने इमोशंस को आपने काबू में रखना होता है। अगर गुस्सा भी आ रहा है एंड यू वांट टू एक्सप्रेस योर एंगर, so you have to communicate in a way that the other person know what you want to say, और आपका जो वो मसला है वो मज़ीद ख़राब ना हो। ठीक है, make small changes. So if you are going to communicate to someone, you have to change your voice tone according to that person. ठीक है, वो आपने अपनी changes उसमें लेकर आनी होती है। और if you are going to deliver a lecture, और if you are going to convince a customer, तो आप उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी इंटेंडेड ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करना होता है। By considering your audience, practicing active listening, clarifying your communication, and choosing the right medium or environment, you are well on your way to exercise communication effectiveness. ठीक है, if you are working on these tips, on these areas, surely your communication will be effective, and you can deliver your message in a more better way, that the audience will take your information effectively and you have an impact on them. ठीक है, तो ये था आज का हमारा हमने कवर करने की कोशिश की है कि how can you communicate, how can you deliver your message in a more effective manner. ठीक है, hope so it is useful for you in both personal and professional life. I am waiting for your feedback, so write down into the comment box. Take care of yourself and our channel as well. Thank you. Allah Hafiz.